वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आज हम क्वेश्चन 8 से करेंगे। सो क्वेश्चन 8 इज़ 13 मैन कैन वीव 117 बास्केट्स इन अ वीक। हाउ मैनी मैन विल बी नीडेड टू वीव 189 बास्केट्स इन 3 days। देखिए 117 baskets is weaved in 7 days. By how many mens? By 13 mens. Okay, so one basket can be weaved in 7 days by 13 by 117। ठीक है, इसमें भी यूनिटरी मेथड होगी। 13 इंटू 1 डिवाइड बाय 117। सो वन बास्केट कैन बी weaved in 1 day is equal to 13 into 7 whole divide by 117. So 189 baskets can be weaved in 3 days इज इक्वल टू वॉट। देखिए यहाँ पे ना हम सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि हमको पता है कि ये आगे ये कैलकुलेशन में काम में लगेगा। सो बेटर नॉट टू वेस्ट टाइम। ठीक है, यहाँ पे मतलब पहले से कैलकुलेट मत कर लो, वरना तो क्या हो जाएगा, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे कैलकुलेशन में। सो अब यहाँ पे जो फाइनल कैलकुलेशन है वो कर लीजिए। सो ये डायरेक्टली 3 से जाएगा। 3 6 ज़ा 18 एंड 3 3 ज़ा 9, which is equal to 49 men. Question number 9. A journey by car takes 48 minutes at 65 km per hour. How many fast must the car go to finish the journey in 40 minutes? तो सबसे पहले a car can finish a journey in 48 minutes with the speed of 65 km per hour. ठीक है, now the car finish the journey in 1 minute with the speed of 65 into 48 km per hour. Okay, so the car will finish the journey in 48 minutes with the speed of 65 into 48 डिवाइड बाय 40। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 20 ज़ा 2 24 ज़ा 2 10 ज़ा 2 12 ज़ा। सो ये होगा 780 अपॉन 10 विच इज़ इक्वल टू 78 किलोमीटर पर आवर्स। मतलब कि देखिए 28 पैरेट्स थे जो 7420 ग्राम्स ऑफ नट्स पूरे दिन में
कंज्यूम करते थे, उसमें से 8 पैरेट्स को दूसरी जगह पे भेज दिया, तो फिर कितनी क्वांटिटीज़ चाहिए एक दिन में? कितने थे? 28। पैरेट्स सेंड टू अनदर जू, कितने भेजे? 8। ठीक है, तो रिमेनिंग पैरेट्स इट्स 28 माइनस 8 इज इक्वल टू 20 पैरेट्स। ठीक है, अब देखिए 28 पैरेट्स कैन कंज्यूम 3420 ग्राम ऑफ नट्स। ठीक है, तो 1 पैरेट will obviously consume 3420 upon 28। ठीक है, तो 20 पैरेट्स will consume 7420 upon 28 into 10 into 20। ठीक है, तो ये 2 14 ज़ा, 2 10 ज़ा, 2 7 ज़ा, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 and 0 विच इज़ इक्वल टू, ये भी 5 से जाएगा, 7 5 ज़ा 35, 21 बचा, सो 7 3 ज़ा 0, so it's 5300 gram of nut. If 5 men or 7 women can earn 700 rupees per day, how much would 7 men and 11 women earn per day? तो देखिए 5 men is equal to 7 women. Okay, so 1 man is equal to 7 upon 5 women हुआ। ठीक है, सो 7 मैन इज इक्वल टू वॉट? यूनिटी मेथड जाएगी, 7/5 इंटू 7 विच इज़ इक्वल टू 49/5 वुमेन। ओके, सो टोटल वुमेन कितनी? सो देयर फॉर टोटल वुमेन in second case is equal to 49 upon 5 plus 11 which is equal to 49 plus 55 upon 5 which is equal to 104 upon 5. ठीक है, so now seven women can earn in a day is equal to 700 rupees. So one woman will earn per day equals to 700 upon 7 and 104 upon 5 women will earn per day is equal to into 104 upon 5. So which is equal to 20 into 104 which is equal to 2080 rupees. If 5 laborers earn rupees 9,000 in 15 days, how many laborers can earn 6720 in 8 days? तो देखिए rupees 9,000 is to rupees 6720, तो 9,000 कितने डेज में है? 15 डेज में। ठीक है, इस टू ये कितने? 8 डेज में। ठीक है, और ये कितना है?
तो इसका अगर मुझे ये रेशियो करना है तो ये 5 लेबरर्स इज़ टू एक्स, ठीक है, वो पता नहीं है। सो अगर मैं डायरेक्ट वेरिएशन लूँगी तो लेस अर्निंग लेस लेबरर्स होगा, और इन्वर्स वेरिएशन क्या होगा, लेस डेज मोर लेबरर्स होगा, ठीक है। तो देखिए 9000 इज़ टू 6720 and 15 is to 8, so 5 is to x, so x is equal to 6720 into 15 into 5 whole upon 9000 into 8, okay, which is equal to what, 7. So number, a fort had provisions for 450 men for 80 days. After 10 days 50 more men arrived. How long will the remaining food last at the same rate? तो देखिए सबसे पहले टोटल पीरियड 80 डेज, ठीक है। अब देखिए आफ्टर 10 days period will be 80 minus 10, which is equal to 70 days, okay. So number of men in the beginning कितने हुए, is 450. Now again after 10 days more men arrived. How much, 50. So total men कितने हो गए, 450 plus 50 which is equal to 500, ठीक है। सो देखिए 450 men is to 500 men equals to 70 days is to x days, ठीक है। हमको नहीं पता है क्योंकि 450 जो है वो 70 डेज। सो यहाँ पे हम इन्वर्स वेरिएशन होगा, सो बाय इन्वर्स वेरिएशन 500 is to 450 and 70 is to x. So x is equal to 450 into 70 whole divide by 500, which is equal to 63 days. So what will be the period? Period is 63 days. Typist working 7 hours a day. Type A thesis in 10 days. For how many hours per day should type 2 typists work to finish it in 21 days? तो देखिए 3 typists type a thesis in 10 days. कितने आवर्स में, 7 आवर्स में। तो 1 टाइपिस्ट का क्या हुआ, 7 into 3 hours, ठीक है। नाउ 1 टाइपिस्ट विल टाइप इन 1 day, और वो काम कितना करेगी एक दिन में, वर्किंग पर डे इज इक्वल टू 7 into 3 into 10 hours, okay. So 2 typist का कितना होगा, 7 into 3 into 16 upon 2 hours,
So two typist will type in 21 days is what 7 into 3 into 10 upon 2 into 21. तो देखिए सबसे पहले तो ये 2 फाइजा जाएगा, 3 7 ज़ा, और ये 7 और 7 यहाँ पे कट हो गया, बचा क्या ओनली 5. सो 5 hours a day. 7 workers working 6 hours a day can build a wall in 12 days. How many days will 3 workers take to build a similar wall working 8 hours a day? तो देखिए 7 workers is to 3 workers. Okay. So it is nothing but 12 days is to x days. So it's 6 hours a day is to 8 hours a day. मतलब लेस वर्कर्स मोर डेज एंड मोर आवर्स अ डे एंड लेस डेज. ठीक है. सो यहाँ पे हम इन्वर्स वेरिएशन ही यूज़ करेंगे. थ्री इज टू 7, 8 इज टू 6, 12 इज टू x. ठीक है. मतलब देखिए क्या होता है, x इक्वल्स टू 7 इंटू 6 इंटू 12 अपॉन 3 इंटू 8. सो ये 3 2 ज़ा, 2 4 ज़ा, 4 3 ज़ा, विच इज़ इक्वल टू 21. सो आंसर इज़ नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 21. ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. और अगर और कोई चैप्टर क्या भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख दीजिए कि आपको कौन सा चैप्टर चाहिए ये टेक्स्ट बुक में से. तो मैं वो जितना जल्दी हो सके उतना मैं अपलोड करने का ट्राई करूँगी. थैंक यू सो मच.